Welcome students in the third video of chapter 12 in science for class 8 sound. Students, in previous videos we have learnt about sound and musical instruments. Now in this section we will talk about propagation of sound. Even we have learned that how does a human produce sound. Now here in propagation of sound we shall learn that how sound travels from one place to another. And you know that sound needs a medium to propagate. यानी ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत है. As here given, the traveling of sound from one place to another is called propagation of sound. यानी जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है या जाती है तो हम उसको ध्वनि का गमन कहेंगे. एंड इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट एज द मीडियम मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. यह माध्यम कुछ भी हो सकता है. नाउ द मीडियम डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ साउंड. सो द स्पीड ऑफ साउंड in solid is highest than liquid and gas. Students, often you have done a practical with solids and liquids. What happens when you say your friend to strike something on a bench and just you keep your ears on the bench. जैसे आप इस तरह से बेंच पर अपने कानों को लगा देते हो और अपने मित्र से कहते हो कि उस पर चोट करे, तो क्या तुम्हें नजर आता है? क्या लगता है? तुम अनुभव करते हो कि जो कानों में ध्वनि आती है that is better than the air. So solids help sound to propagate fastly than the liquid or gases, and this happens due to the arrangement of molecules. As you know that in solids the molecules are arranged very closely. चूंकि वे एक दूसरे से बहुत घने रूप में सटे होते हैं, इसलिए वे अपने कंपन को आसानी से दूसरे मॉलिक्यूल को पहुंचा देते हैं और इसलिए उसमें ध्वनि का गमन बहुत तेजी से होता है. एज यू हैव सीन इन द ट्रांसफर ऑफ हीट इन क्लास 7. बट इन लिक्विड द अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फार्दर देन द सॉलिड्स. जो कि उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कुछ दूरियों पर बने होते हैं और इसलिए उसमें ध्वनि का गमन सॉलिड की अपेक्षा कम हो पाता है. बट इन गैसेज द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ फार फ्रॉम वन टू अनदर एंड सो इट कैन बी हियर्ड लोएस्ट देन अदर टू. सो यू कैन डू एन एक्टिविटी बाय योरसेल्फ एट योर होम with solid, liquid and gases. Now students, in your book also two activities have already been given and you can do it by making paper phone. As I have a paper phone, just it has been made up by two paper, glass and they are joined by a thread. So when you say
to your friend or your brother or sister to keep it with ears, and you start speaking in a very low voice, then you find that your voice can be clearly heard by your friend. आप इस तरह के फोन को बनाकर और टेस्ट भी कर सकते हो. तो why, how your voice travels from one cup to another? It becomes possible due to this thread, as the molecules of thread are arranged closely and they help in the propagation of sound from one cup to another. So it can be understood by this video easily. So let's see the video and learn. Transmission of sound. Every sound is produced by a vibration. Vibration is the back and forth movement of an object. As you speak, vibrations are produced by the vocal cords in the throat. You can hear only when the sound energy reaches your ears. But how does sound energy travel? Wonder how that works? Come, let's go across to Dr. Zook. Sound energy travels in the form of sound waves. There are mainly two types of waves: transverse wave and longitudinal wave. Let us see how waves travel. We can use a slinky spring to observe both types of waves. Emily is holding one side of the slinky, while Dr. Zook is holding the other end. With a quick upward flick of the wrist, Dr. Zook has sent energy traveling through the slinky. Notice how the slinky moves? This is a transverse wave. In a transverse wave, the particles vibrate at a right angle to the direction of the wave. The wave traveled from Dr. Zook to Emily and back. Now let's see what a longitudinal wave looks like. Emily is holding one end of the slinky, while Dr. Zook is pulling its other end towards himself and then pushing it towards Emily. Watch closely and you will notice that some of the coils crowd close together and then slowly move farther apart. This is because the vibrations are parallel to the direction of the wave. If the wave moves from right to left, then the particles also vibrate from right to left. This is a longitudinal wave. Sound waves are longitudinal waves. These waves travel at different speeds in different mediums. The medium could be a solid, liquid, or gas. Now let's see how this works. In a solid, the particles are very close together. Sound energy moves as one particle hits the other particle. With the particles being so close together, sound travels quickest through a solid. If we look at particles in a liquid, they appear to be slightly further apart when compared to solid. Thus, sound energy takes a little longer to travel through a liquid. Look at the particles of gas. They are spread out, and hence, sound waves travel most slowly through them. Propagation of sound. You now understand how is sound produced by different objects and humans. But an important question remains unanswered. If a stone has struck a window pane, causing it vibrate and produce a loud sound, how does the sound from the window pane reach us or our ears? Students, in the class I also just
tells about you that the sound reaches us by a medium, and here the question arises how the stone produce sound and how it reaches to us. So sound needs a material medium to propagate, यानी ध्वनि को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, और माध्यम कैसा होना चाहिए? एक पदार्थ होना चाहिए। Have you ever seen a documentary film or a news item related to the surface of the moon? Do you know a verbal communication without an ad is not possible on the surface of the moon? अर्थात जब कोई व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक चांद पर जाता है तो वह अपनी बातों को कैसे दूसरे तक पहुंचा सकता है? इसके लिए उसके पास एक साधन होता है। वह सिंपली बिना साधन के अपनी बातों को दूसरे तक क्यों नहीं पहुंचा सकता है? बिकॉज देयर इज नो एटमोस्फियर, वहां हवा नहीं होती है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो एटमोस्फियर अराउंड द सरफेस ऑफ द मून। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड this fact clearly. As here an activity has been given in which a boy put iPod in a box, and now he is just preparing a vacuum place inside the box. Then what will happen? He will find that in the absence of air, the boy cannot listen the voice of the iPod, which is just playing inside the box. अर्थात इसमें बच्चे ने क्या किया? पहले iPod डाला, फिर उसमें एक सॉन्ग लगाया, और वह सॉन्ग जब उस डब्बे को वह बंद कर देता है तो उसे सुनाई पड़ता है, लेकिन यहाँ वॉइस कैसा होता है? वह फेंट होता है। अब वह बच्चा क्या कर रहा है? एक वैक्यूम पंप से उसके अंदर की एयर को निकालने का प्रयास कर रहा है, और वह पाता है कि जैसे जैसे वह उस हवा को निकालते जाता है, उस आईपॉड की आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है, और अंत में बिल्कुल उसे सुनाई नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? इट हैपेंस ड्यू टू द लैक ऑफ मीडियम, क्योंकि वहाँ जो साधन एयर था, जो उस ध्वनि को हम तक पहुँचा रहा था या उस बच्चे तक पहुँचा रहा था, वह वहाँ नहीं रहता है। You must be understanding that in the initial position when the piston was closed, there was air in the jar and the sound of the iPod was audible. Pulling the piston outward takes the air out from the jar and the sound from the iPod becomes inaudible. यानी पहले स्थिति में जैसा मैंने आपको बताया कि जब उसमें एयर था, इसलिए जब वह अपने पिस्टन को इनवर्ड पोजीशन में रखा है तो उसे सुनाई पड़ रहा है ध्वनि, और जब वह पिस्टन से एयर को निकाल रहा है उसे ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रहा है। Thus, this is the particle of air which are carrying the sound of the iPod from within the jar to our ears. Let us now find out, is it only air or gaseous particle through which the sound can travel? You must have studied that fish and other aquatic animals send sound signals to communicable with each other. Let us perform an activity to confirm the fact that sound can travel through liquid. जैसा कि ये क्लियर है कि सिर्फ हवा या गैसियस मटेरियल ही साउंड को पास करते हैं, तो इस लिक्विड मटेरियल साउंड को पास करता है कि नहीं, हम इसके बारे में इस एक्टिविटी में देखेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि कैसे पानी में रहने वाले जंतु अपने बातों को
अपने दूसरे साथियों तक पहुंचाते हैं। एंड इट शोज दैट लिक्विड is also helpful to propagate sound. So in this activity it has been told that a boy just put a bucket approximately 3/4 full of water and adjust her ears near the level of the water, and he start playing the key bunch inside the water. Now he finds that the voice start coming from the water. So far you have practically verified that the sound travels through gases and liquid. Let us try upon solids now. About it I just shown you during study how the solid propagate sound, and this can be checked for the activity as given here, in which a boy has kept his ears on the bench and he is just striking the bench by his hand, and he gets that the sound easily coming in his ears. This activity shows that solid also helps in the propagation of sound. Now here is a fact given. It is the property of sound to travel through solid which probably evolved the famous saying even walls have ears. आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, अर्थात ध्वनि हर माध्यम से गमन कर सकती है. Making use of this property of sound, let us make a telephone to our own. Take 2 empty ice cream cups and a long thick cotton thread. Pick the base of both the ice cream cups to make small holes in them. Pass one end of the thread through the hole in each cup and put a big knot at the end of the thread inside the cup so that the thread does not leak out the cup. The telephone is ready to use. Students, आपने अभी स्टडी के दौरान देखा है कैसे मैंने एक फोन बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो पेपर कप थे उसमें एक डोरी लेते हैं और इस डोरी को दोनों पेपर कप के ठीक बीचों बीच हम छेद करते हैं सुई से, और उस डोरी को अंदर डालकर फिर एक मोटा नॉट बनाते हैं ताकि वह उस छेद से बाहर नहीं आ पाए, और फिर इस तरह से हमारा एक पेपर का फोन तैयार हो जाता है. फिर हम यह पाते हैं कि जब उन धागों को बिल्कुल हम स्ट्रेट रखते हैं और खुद एक पार्ट अपने मुंह से लगाते हैं और दूसरा पार्ट अपने साथी के कानों तक पहुंचाते हैं, और फिर हम जब एक पार्ट से बोलते हैं तो हमारी सारी आवाज़ हमारे मित्र के कानों में पहुंच जाती है. Now the same activity has been given here. So it says that hold one cup with your hand in front of your mouth and ask a friend to hold the other cup close to her ear. Speak something and find out if your friend heard it. Then you can exchange the position of the cups. Bring your cup close to your ear and tell your friend to hold it in front of her mouth and speak. Can you hear her? The only precaution which you have to follow while using this telephone is that the threads should not be touching any other object. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस एक्टिविटी में ध्यान रखना है कि पहला तो आपका धागा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, दूसरा या किसी दूसरे चीज में टच नहीं होना चाहिए.
The above activities successfully describe that sound cannot travel through vacuum. It can travel through all different states of material that are gases, liquids and solid. आपको पता है कि ध्वनि बिना माध्यम के गमन नहीं कर सकती है, अर्थात यह निर्वात में नहीं जा सकती है, और इसलिए इसे किसी न किसी माध्यम की जरूरत है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो. Since the gases, liquid and solid are made up of particles of different materials, they are referred to as material medium. चूंकि ये सारे चीज कैसे बने होते हैं, किसी न किसी पदार्थ के बने होते हैं, इसलिए इनको पदार्थीय माध्यम के नाम से जाना जाएगा. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो दैट what is the speed of sound in different states of matter.